Hello everyone, very good evening. I hope you all are doing well and good, and everyone is keeping well. So, today in the class, we are going to read, we are going to move further into the chapter moving charges and magnetism. But before we do questions, before we delve into concepts, let's start with some questions. Okay, so two questions I have selected in the yesterday's class. Basically I dealt with two formulas, right? One was force acting on a charge moving with velocity v in a magnetic field, and the formula was q v cross b, if you all remember. This was the formula, right? And then there was another formula. This formula was for which case? When there is magnetic field in any region. Let's say this is the magnetic field. I told you this is inward magnetic field, and this is magnetic field notation in the direction of minus k cap. And here there is a charged particle moving with velocity v. Then force acting on it, magnetic force acting on it, will be equal to this. Okay? After that, we studied if we have current carrying wire. Let's say this is a current carrying wire. It has current I flowing in it, and this current carrying wire is also placed in a region where there is magnetic field. Let's say in this region there is outward magnetic field. Then force acting on this wire can be written as what? I into L, I into L cross B. Okay? What is the direction of L vector? So L vector direction was in which direction? In the direction of what? Can you fill in the blanks? In the direction of what? Chalo, fill this blank space. Direction of L is in the direction of what? Anybody? Anyone? Yes, Kiran, Adi, Dhruv, Kshetra, Latika, Priya, Ranju, Lakshmi. You were not in yesterday's class, I guess. Venu, Shri. Anybody let me know. Direction of L is in the direction of what? B ka direction is given, current direction is given here. What will be the direction of L vector? Dekho, don't crack a joke by not answering me. I expect at least this little यार. Let me know. कल के क्लास में मैंने ये कई बार बोला है. So many times I have repeated it. Not once, twice or thrice. So many times. Direction of L vector. तुम लोग नहीं सुधरोगे है ना? ठीक है? मत सुधरो. That is your loss. Do this question. देखो, you are not in a stage where I need to spoon feed things. I cannot do this. I'm really disappointed with you people. Simple thing you don't answer, yaar. This is too much. क्या है ये? ठीक है, करो. Do whatever you feel like doing. Here T is the unit of magnetic field. This is test law. Okay? That we will study later. So you don't need to worry about it. Magnetic field is given. It has two components, B naught in the I cap direction and 2 B naught in the J cap direction. Velocity is also given. If the magnetic force acting on this is this, then what is the value of B naught? That is you are getting asked. Use the formula and let me know.
Sorry, I have launched the poll. You don't need to answer in the poll actually. There are no options given, right? This is integer type question. 5 integer types question you will be getting in JEE Mains. And those questions used to be easy. So let me know the answer if you're getting in the chat section. And let me tell you, from today onwards, I'm not going to put in that much effort because you people are not putting in any effort. So why to waste my energy? I'm going to save it also. कुछ भी नहीं बताते हो यार तुम लोग क्लास में. ऐसे कैसे काम चलेगा? ऐसे तो चैप्टर बाय चैप्टर खत्म होता जाएगा और तुम लोग बस क्लास में आओगे लाइक अ डमी. यू विल बी लिसनिंग एंड देन गोइंग बैक. आई एम रियली एंग्री विथ यू पीपल. फोर्स क्या होता है बताओ? फोर्स होता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या है? यस लक्ष्मी, दैट आई रोट एट दैट टाइम. फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इज योर आई एल क्रॉस बी. मैं रोज ये सोचकर क्लास में आती हूँ कि तुम लोगों को कुछ सिखा कर जाऊंगी. तुम लोग का इंटेंशन ही खराब है, पता है. यू पीपल आर नॉट कैरिंग द राइट एटीट्यूड. I mean, you people are good. Behavior wise, you are too good. But if you're not learning, if you're not carrying things forward, what is my benefit? प्यार से बात करने से तो काम नहीं चलता ना. You need to learn things. You need to show it in the performance. At least you need to reply. This is I values. Sorry, this is not the formula I should be using. Here we are calculating force acting on a electron which is moving with this velocity in this magnetic field. So basically we have to calculate force on moving charge in magnetic field. Formula क्या होगा? V cross B. ठीक है. So Q का वैल्यू क्या है? Charge on electron is how much? Minus E. V cross B. V का वैल्यू आप लिख डालो 3I cap plus 5J cap. क्रॉस क्या करने वाले हो? मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज B naught I cap plus 2 B naught J cap. Please put in more effort. This is cross thing. And how to do the cross product that you have studied in your class 11th. ठीक है. मैंने टाइम एंड अगेन बोला है, अगर तुम लोग को 11th का वेक्टर क्लियर नहीं है, डू इट. इफ यू डोंट नो इंटीग्रेशन, डू इट. इफ यू डोंट नो डिफरेंशिएशन, डू इट. क्योंकि ये सारे थिंग्स विल बी कमिंग इन द क्लास 12th. इफ यू डोंट नो दिस टॉपिक, it will be very difficult to understand physics, even of class 12. These are basics here. This is minus E. Now do the cross things. So if you go on to do the cross, I cross I क्या होता है? I cross I. What will be the value? 3I cross B naught I. So basically magnitude तो आप लिख दोगे 3B naught multiply किया. I cross I क्या होगा? I cross I क्या होता है? Anybody? What is the value of I cross I? JNB. It's very good. You people are excellent. I mean, I will tell excellent. देखो अभी भी टाइम है, पढ़ लो. मैं कहती हूँ सीरियसली पढ़ लो. पढ़ने का नाटक नहीं करना है. नाटक कैसे होता है? छुट्टी में गए हो, यू पीपल मस्ट हैव जॉइंड सम कोचिंग और समथिंग. यू पीपल आर जस्ट मेजरिंग द डिस्टेंस फ्रॉम होम टू ट्यूशन. हियर यू पीपल आर कमिंग. मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बोला था, व्हेन आई स्टार्टेड द क्लास ऑलमोस्ट 1 month बैक, I told you to learn the vector. I told you to learn integration, differentiation. Till now, you have not learned it. Tell me how you are following the things. You people are not following it, right? This is a loss. I'm telling you, this is your loss. Big loss. Cross product क्या होता है? Cross product will write like A cross B. This is equal to AB sine theta. If you do I cross I means you are doing cross product of two unit vectors in the same direction. Angle between them is 0. So sine 0 is 0. It will be 0. J cross J is what? 0. K cross K is what? 0. Dot product will be 1. I dot I. Dot product का value क्या होता है? A dot B अगर आप करते हो, you will be getting AB cos theta. So
I dot I will be 1. Again, I dot j will be 0. I dot k will be 0. K dot j will be 0. But j dot j will be 1. You should know these basic things. You know, these are very basic. Yeah, you should know. So this will become 0 plus 3 I cap क्रॉस 2 बी नॉट जे कैप. तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लिया जाता है. डू द मल्टीप्लीकेशन. तो हियर यू विल बी राइटिंग 6 बी नॉट. आई क्रॉस जे क्या होगा? कल के क्लास में मैंने तुम लोगों को सिखाया था, इसलिए आई क्रॉस जे क्या होता है? आई क्रॉस जे इज के. सो हियर इट विल बी के कैप. अब एक काम करो, अब 5 जे कैप को इस पूरे से क्रॉस करो. तो डू इट. प्लस 5 जे कैप क्रॉस बी नॉट आई कैप. तो 5 इंटू बी नॉट क्या हो जाएगा? 5 बी नॉट आई क्रॉस जे क्या होगा बताओ? Sorry, this is j cross I, right? So j cross I will be how much? It will be equal to minus k. So here you write minus k cap. Now 5j cross 2b not j. J cross j क्या होता है? 0. So here you write 0. These are the things we are getting. So what is the value we are going to get of force? फोर्स का अगर यहाँ पे लिखो तो लिखोगे माइनस ई 6 बी नॉट माइनस 5 बी नॉट 6 b naught minus 5 b naught k cap. So this is equal to how much? This is equal to minus E b naught. This is the force k cap. Right? If you talk about the magnitude of force, negative sign को आप neglect करोगे. Magnitude is how much? This is E b naught. And here magnitude of force is written as what? 5E. So E b naught को आप किससे compare करने वाले हो? 5E. E will get cancelled. B naught का value is what? This is 5. So answer will be what? 5. Yes, Kiran. ठीक है? So you should know how to do the cross product. You should know how to do the dot product. You should know how to add two vectors. कैसे हम आगे पढ़ेंगे बताओ? तुम्हारे फ्यूचर के लिए ये बहुत, ये अलार्म है. आई एम टेलिंग यू, दिस इज अलार्म एंड गेट अलार्म. अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है. जब जागो तब सवेरा. बट सही से जागने की जरूरत है यार. You people are not realizing how much behind you people are. I mean, you're competing with the whole batch of students reading in class 12. You have any idea how people are progressing in their classroom? I'm not telling you compete that way, that much. I mean, in a way that is going to disturb you. No, don't compete with anybody, but at least do the reflection part. I mean, analyze yourself. खुद से क्वेश्चन पूछो. You know vector or not? You know integration or not? You know differentiation or not? Second question पूछो. Can you do physics without vector? Can you do physics without differentiation? Can you do physics without integration? दोनों का, I mean, if answer is no, you cannot. And if you don't know first one, you should do it. If you really want to learn physics, if you really want to get into some college, it's very mandatory. Yeah, this is very mandatory. देखो दुनिया बहुत competitive है. I'm telling you, if you're not making your caliber, if you're not building on your abilities and strength, I mean, you're not going to stand anywhere in this world. Up to 12th, we people are like in a sort of cage. We think this is the world. No. Be willing. That is what I would say. इसलिए मैं हर बार क्वेश्चन पिक करती हूँ. आई एम लाइक let me pick the question, let me give you questions so that you get idea of what sort of questions are getting asked. I take questions so that you get excited to do more number of questions, so that after class you open books, so that after class you open PYQs. I mean, if you're going to appear for NEET, you should look at PYQ of electrostat. You should look at PYQ of capacitor and electricity, the chapters which has already been finished. If you are not looking at those PYQs, it means you're not interested. And in the last, I mean, in the last leg of year, when the exam will be near, what you will be doing? You will be going through the PYQs. And you won't be getting anything at that point of time. You will feel like it's useless. So it's high time you start doing it. I mean, preparation क्या होता है? Preparation is not about first you finish all the chapter, then you start doing the question. No, it doesn't go that way. Things go hand in hand. You have to do both the things together. मैंने
स्टार्ट में भी तुम लोगों को काफी मोटिवेट किया था कि अगर 11th नहीं भी हुआ है, दिस वेकेशन इज द टाइम व्हेन यू कैन कंप्लीट इट. Go for looking. So many lectures are there on YouTube. You can do it. यार तुम नहीं कर सकते कौन करेगा? यू आर सो यंग किड. आई मीन यू आर किड. यू हैव दैट मच ऑफ एनर्जी. यू हैव दैट मच ऑफ पोटेंशियल. बहुत है तुम लोगों के अंदर. सीरियसली पीपल आर वेस्टिंग इट. आई एम टेलिंग यू. यू आर वेस्टिंग इट completely. Don't do it. Make yourself someone, na? And making yourself someone doesn't mean you have to score too big. I mean, you have to simply give yourself to the task at hand. That is the job of a person, anybody. After that, if you get not getting rank or anything, it's not your fault. Let it go. Chalo, question karo. Again, this is integer type. Read the question. Try it at least. Then I will explain. I hope you people are trying it. Diagram draw karo. Forces को लिखो. चलो ठीक है. If anybody got the answer, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है. ठीक है, समझाती हूँ. तो क्वेश्चन ये कह रहा है, देयर इज अ स्ट्रेट वायर AB ऑफ मास 40 ग्राम एंड लेंथ 50 सेंटीमीटर. सो देयर इज दिस रॉड AB. इसका मास दिया हुआ है. मास गिवन इज हाउ मच? 40 ग्राम. एंड इट्स लेंथ इज गिवन 50 सेंटीमीटर. ठीक है. एंड दिस इज सस्पेंडेड by a pair of flexible leads in uniform magnetic field of this much. So किसी भी चीज को अगर तुम्हें हैंग करना है, you will take the help of thread. तो यहाँ पे हमने दो थ्रेड लिया है, ये पहला ये दूसरा. इसके हेल्प से इस रॉड को हैंग किया है वर्टिकली. ठीक है. सो इट इज लाइक दिस. द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट रिक्वायर्ड इन द वायर टू रिमूव द टेंशन इन द सपोर्टिंग लीड. ठीक है. अब तुम खुद सोचो, यू हैव अ स्प्रिंग. लेट्स इमेजिन यू हैव अ स्प्रिंग. ठीक है. एंड you are hanging a mass from it. What will happen to the spring? A spring will get stretched, है ना? So spring force का वैल्यू तुम्हें पता है, इक्वल टू क्या होता है? kx होता है. So spring will get stretched. टेंशन आएगा. ठीक है. यस किरण, टेंशन आएगा यानी कि स्ट्रेचिंग होगी. और ये मास थोड़ा नीचे आ जाएगा ऐसे. स्प्रिंग एक्सटेंड हुआ. ठीक है. और नीचे आकर ऐसे रेस्ट में हो जाएगा. कहने का मतलब, इस मास पे जो अभी फोर्सेस लग रहे, mg नीचे लग रहा है एंड ऊपर इज द टेंशन वाला फोर्स, दैट इज इक्वल टू हियर हाउ मच? kx. तो यही टेंशन mg को बैलेंस करके रखे हुए है एंड दैट इज व्हाई दिस मास m इज इन रेस्ट. यस. t इक्वल टू mg. तो यहाँ पे T इक्वल टू mg आप लिखोगे. टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी. हमेशा याद रखना, कभी भी स्ट्रिंग में टेंशन होगा वो हमेशा किधर लगता है? अवे फ्रॉम द बॉडी. ओके लक्ष्मी, लेट्स चेक. सो टेंशन कहाँ लगेगा? अवे फ्रॉम द बॉडी. अब हमारे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि देखो तुम्हारे पास एक रॉड है. ठीक है. सो जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, और मैग्नेटिक फील्ड था, रादर करंट वाज नॉट फ्लोइंग थ्रू द वायर, क्या क्या फोर्स लग रहे थे बताओ? फोर्स लग रहा होगा ऐसे mg नीचे की तरफ. यहाँ पे टेंशन लग रहा होगा T. टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी लगता है, इसलिए मैंने अपवर्ड लगाया.
यहाँ भी टेंशन लग रहा होगा अवे फ्रॉम द बॉडी, क्योंकि देर आर टू स्ट्रिंग्स एंड दीज टू स्ट्रिंग्स आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड। ठीक है, इसलिए दोनों में टेंशन मैंने सेम लिया। ठीक है, इक्वली क्वाइट सिमेट्री है, इसलिए मैंने सेम लिया है। ठीक है, अगेन यू नीड टू डू अ लॉट ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम इक्विलिब्रियम, रॉड का एंड ऑल, मैकेनिक्स करना चाहिए सभी को। ठीक है, दैट विल गिव यू लॉट्स ऑफ आइडियाज। सो यहाँ पे ये ऐसा है ना, जब करंट नहीं फ्लो कर रहा है, इन दैट केस 2t इज इक्वल टू mg। ठीक है, अब तुमसे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि व्हाट इज गेटिंग सेड, द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट रिक्वायर्ड इन द वायर टू रिमूव द टेंशन। नाउ लेट्स से वी आर फ्लोइंग करंट इन द वायर, so yes Kiran, so in that case what will happen, if current is flowing through the wire and this wire is kept in a magnetic field, magnetic force will act, and magnetic force का अगर आप यहाँ पे डायरेक्शन निकालोगे ना, क्या होता है, I L क्रॉस B। अगर एल का डायरेक्शन किधर लेते हैं, करंट के डायरेक्शन में, सो करंट इज फ्लोइंग टुवर्ड्स आई कैप, लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, सो दिस इज आई क्रॉस, मैग्नेटिक फील्ड इज इन माइनस के कैप डायरेक्शन, माइनस के कैप। आई क्रॉस माइनस के कैप क्या हो जाएगा, आई क्रॉस के क्या होता है तुम्हारा, आई क्रॉस के होता है माइनस जे, है ना, आई जे के, आई क्रॉस के क्या होगा, माइनस जे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस जे। सो मैग्नेटिक फोर्स जो लग रहा है ना, वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। और अगर ये अपवर्ड फोर्स mg के बराबर है, तो इस स्प्रिंग को एक्सटेंड होने की जरूरत नहीं है बैलेंस करने के लिए, समझ रहे हो, एंड इन दैट केस टेंशन विल बी जीरो। तो टेंशन को अगर जीरो होना है तो क्या होना चाहिए बताओ, यहाँ पे सपोज कर लो टेंशन T, टेंशन T, अब तुम क्या लिखोगे, 2t प्लस एफ बी इज इक्वल टू mg, एंड इफ टेंशन इज जीरो देन यू विल राइट एफ बी इज इक्वल टू mg। सो अब आप आंसर लिख डालो इसका, आई एल बी विल बी इक्वल टू एम जी। वैल्यूज पुट करो, आई का वैल्यू क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट ही निकालना है, दैट इज नॉट गिवन, सो आई निकालना है। लेंथ का वैल्यू क्या है, 50 सेंटीमीटर, दैट इज हाफ मीटर। बी का वैल्यू क्या है, 0.04 टेस्ला, सो 4/10। मास का वैल्यू क्या है, मास इज योर 40 ग्राम, एंड 40 इंटू 10/1000 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करोगे, तो यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हुआ, यहाँ से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। आई का वैल्यू कितना होगा बताओ, आई का वैल्यू होगा 2 एम्पियर। यूनिट को प्रॉपर लिखना है, ठीक है, सारे को एसआई यूनिट में लिखो, सेंटीमीटर है मीटर में कन्वर्ट करो, ग्राम है केजी में कन्वर्ट करो, then you will get the value of I, and I here is 2 mp. So this is how we can solve this question. I mean, you people were not able to understand the question because तुमने कभी इस तरह से क्वेश्चन कभी पढ़ा नहीं। अगर तुम लोग 11th क्लास को सही से करे होते तो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। आई एम टेलिंग यू, दिस इज अ टाइप ऑफ क्वेश्चन की जस्ट देखा और हो गया, ऐसा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो आई विल से कि डू अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, डू लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, यू रिक्वायर इट। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। कल के क्लास में मैंने ये पढ़ाया कि व्हाट विल बी द फोर्स एक्टिंग ऑन मूविंग चार्ज in a magnetic field, and if force is acting, because of that force it will move in certain trajectory along certain path। ठीक है, yes लक्ष्मी, that is why I pointed out, तुम भूल गई थी इसलिए तुम्हारा आंसर 2000 आ रहा, and that is why I emphasize this। ठीक है, मुझे समझ में आ गया था तुम्हारा आंसर देखकर। ठीक है, चलो, so we let's consider first case। Let's say there is a magnetic field, let's say cross magnetic field is there, and this is cross magnetic field, perpendicular to the plane is magnetic field, into the plane, and into the plane मतलब समझ रहे हो ना, तुम्हारे सामने जो भी स्क्रीन है ना, उसके अंदर एक लाइन भेजो, that is into the plane, उसके बाहर से एक लाइन निकालो, that is out of the plane। So this is the concept of into the plane and out of the plane। Just give me some time। ठीक है, so let's say here charge is moving in this direction। ठीक है, ऐसे, so this direction is definitely perpendicular to the magnetic field,
because magnetic field is into the plane and charge is going this way. So they are perpendicular to each other. Now this is this. What will be the trajectory? So देखो force will tell you what will be the trajectory. Force क्या लिखा आपने? Force लिखा Q V cross B. और कल की क्लास में मैंने बताया था if force is like this, it means this force is perpendicular to velocity and also this force is perpendicular to magnetic field. Let's focus on this portion. Which portion I'm talking about? Force is perpendicular to the velocity. ठीक है? So remember circular motion. Circular motion में आपने क्या देखा था कि if there is a force, if there is a particle moving in a circle, then there is a force acting towards the center, and that is called centripetal force. So let's say body is here. Centripetal force will act towards the center like this, and here velocity is in this sense. So you can clearly say that this centripetal force is always perpendicular to velocity. Done it? So when we see like there is a single force which is always acting or which is always perpendicular to the velocity, then that particle must be going in a circle. Done it? So we will say that if force is always perpendicular to velocity, that is the case here when charge is moving in a magnetic field with velocity v. Whatever force is acting because of the magnetic field, that force is perpendicular to velocity. Because this force is cross product of V and B. So F has to be perpendicular to V. And if F is perpendicular to V, a trajectory will be circular. So in this case, our particle will go in, charge particle inside magnetic field will go in a circle. Okay? And this is going in a circle because of which force? Because of force equal to QV cross V. So basically here the force, Q is a scalar quantity, QV cross V. So basically this force here will be responsible for providing centripetal force. Okay? But we need to locate the center of this circle. देखो यहाँ तक सबको समझ में आ गया? सबको ये समझ में आया? Everyone got the point that trajectory will be circular? Everyone got this point? Or you need me to explain more? Let me know. Yes. Everybody understood that if charge is moving in a magnetic field, trajectory will be circular. Is it clear? देखो, simple सी चीज है. What I'm trying to say you is that मैंने ये बोला, तुमने सर्कुलर मोशन देखा है ना? सर्कुलर मोशन में क्या होता है? सर्कुलर इस चीज को भूल जाओ, अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ भूल जाओ. लेट्स फोकस ऑन सर्कुलर मोशन. सो इन सर्कुलर मोशन यू सी दैट यू नो ऑलरेडी, पढ़ा है अगर तुमने सर्कुलर मोशन तो. In circular motion, we see that if any body is going in a circle, a force acts towards the center. This force is basically responsible for taking this particle into this circle. Okay? And at any point, velocity of the particle is tangential. जैसे यहाँ पे पूछती हूँ, if particle has reached from here to here, what is the velocity of particle here? So direction will be this way. Here, what will be the direction of velocity? This way. And at each point, centripetal force, which always acts towards the center, is acting like this. So when a body moves in a circle, force is perpendicular to velocity. There is a force perpendicular to velocity. Not always we will say that, क्योंकि तुम लोगों ने नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी पढ़ा होगा, वहां पे टेंजेंशियल फोर्स भी लगता है. In that case, total force will become different. But if it is uniform circular motion, if velocity ka magnitude is not changing, then all the force is acting towards the center only. And whatever force is acting perpendicular to velocity, that force will be responsible for taking the particle into a circle. ठीक है? So यहाँ पे अगर आप force का formula लिखोगे Q V cross B, तो क्या दिख रहा है मुझे? मुझे दिख रहा है force perpendicular to velocity from the cross product. Cross product का basic formula होता है.
In cross product, we say that if there is a cross product, if C vector is equal to A cross B vector, कल के क्लास में भी मैंने बताया था, इसका मतलब ये होता है कि C vector is perpendicular to A vector and C vector is perpendicular to B vector. This is the definition of cross product. From that definition only I am saying कि force is perpendicular to velocity. And if this is the case, then particle will go in uniform circular motion. ठीक है? Because whatever force is acting perpendicular to velocity, and that force will be responsible for taking it into a circle. Everyone agree? किसी को डाउट है बताओ? Agree? Everyone understood or not? समझ गए सभी लोग? ओके लक्ष्मी, ठीक है. ओके, थैंक यू. किरण, महेश, थैंक यू. चलो आगे बढ़ते हैं. सो दिस इज डन. नाउ वी विल लर्न हाउ टू वेयर टू लोकेट द सेंटर ऑफ सर्किल. देखो ये सारे मैं कंपेटिटिव एग्जाम के व्यू से तुम लोगों को बताती हूँ, बट तुम लोगों को आई मीन इफ यू पीपल आर नॉट लुकिंग इनटू क्वेश्चन यू वोंट अंडरस्टैंड कि व्हाई आई टॉट दिस. जैसे अभी जो मैं टॉपिक बताने जा रही हूँ ना, कि ट्रेजेक्ट्री सर्कुलर तो होगा, दैट आई हैव टोल्ड यू. तो यहां से देखो, यहाँ पे चार्ज ऐसे है, अब ये सर्कल ऐसे बनेगा या ये सर्कल ऐसे बनेगा. ऊपर से भी सर्कल जा सकता है, नीचे से भी सर्कल जा सकता है. हाउ यू विल ड्रॉ इट? सो ड्रॉइंग द ट्रेजेक्ट्री इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एंड हाउ वी विल ड्रॉ इट? सिंपल है. ट्रेजेक्ट्री आई मीन सेंटर अगर ऊपर होता है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सेंटर कहीं इधर होगा, यानी कि सेंटर विल बी अलोंग द वाई एक्सिस. एंड इफ सर्किल इज लाइक दिस, it means center will be somewhere here, that is towards the negative y direction. It means in the first case, force will be in this direction. Force will always act towards the center. And in this case, force will act downward. Done it? So, दोनों में से which circle will be, yes, both are circle, right? So, both are circle, but where will be the center? According to center, we will say which circle it will go around. ठीक है? So, let's locate it. Center को locate करने के लिए, let's talk about calculating the direction of force. देखो डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालते हैं. फोर्स को क्या बोलते हो? क्यू वी क्रॉस बी, राइट? वी क्रॉस बी का डायरेक्शन आप निकाल लो, दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, राइट? सो velocity is in, let's say this is x axis, this is y axis, conventional direction I am taking, this is z. Magnetic field here is in the direction of k cap, outward, and velocity here is in the direction of what? I cap. So v cross b means I cross k. और I क्रॉस के का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ I क्रॉस के? माइनस जे और प्लस जे? जेन बी, नो. I क्रॉस के, यस महेश, माइनस जे. प्लीज यार तुम लोग ये गलती अब मत करो, मैंने बहुत दफा तुम लोगों को बताया. I क्रॉस के एंटी क्लॉकवाइज माइनस में लिखोगे, माइनस जे, राइट? Whenever you traverse anti-clockwise, you write answers with minus sign. So minus j. It means force acting at this point when its velocity is in this direction, force is towards the negative y axis. It means what? Center will be somewhere here, because force always acts towards the center, and this force will rotate it like this. So trajectory will be like this, not the upper circle you are going to take, because force is acting downward. Okay? So wherever you have to draw the circle, just try to see where will be the center. And for calculating center, look at the direction of force. Do over here. यहाँ पे किधर center होगा मुझे ये बताओ. In second case, center will be up or down?
सेंटर इज अप और डाउन, फोर्स का डायरेक्शन निकालो क्या है, दैट डायरेक्शन बेसिकली विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. यस महेश. यस किरण, आई एम आस्किंग, यहाँ पे सेंटर कहाँ होगा सेकेंड डायग्राम में बताओ. मुझे फोर्स का ही डायरेक्शन बता दो. व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज क्यू मूविंग विथ वेलोसिटी v in the second diagram? Yes Mahesh, you are correct. So you must have drawn the circle already, right? Yes, everybody tell me what will be the direction of force. Okay, first diagram explain करो. Okay, as you say, तुम लोग मुझे ऑर्डर दे सकते हो, बस मैं नहीं दे सकती है ना, क्योंकि मेरी बात तो तुम लोग सुन नहीं रहे हो. बट मैं तुम्हारी सारी बातें सुनती हूँ, दिमाग में रखना तुम लोग. बस इतना याद रखना, यू विल बिकम सिंसियर. ठीक है. मैंने ये बोला, हाउ यू विल ड्रॉ द ट्रेजेक्ट्री. ट्रेजेक्ट्री कैसे बनाते हैं, ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या होता है. यस किरण, आई अंडरस्टैंड. सो ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या हो सकता है. ट्रेजेक्ट्री मतलब रास्ता होता है, ठीक है. सो in what sort of path it is going to go around. We have already decided it will be circular. If it is circular, it will have a center. Locate the center. क्योंकि if you know center, then you will draw the circle. जैसे देखो, तुम्हें पता है कि इस चार्ज का ट्रेजेक्ट्री सर्कुलर होने वाला है. सो उस सर्कल का कहीं सेंटर होगा. अब देखो सेंटर हम कैसे निकालते हैं, किस जिस पॉइंट पे भी वेलोसिटी का डायरेक्शन दिया है, हियर एट दिस पॉइंट वेलोसिटी डायरेक्शन इज गिवन. राइट द डायरेक्शन हियर, दैट इज आई कैप. मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यू राइट, दैट इज के कैप. And you already know I cross k is minus j cap. So you know that at this point force is acting in this direction. ठीक है. And if you see here, here the velocity is in this direction, force is in this direction. So circle must be like this. Why? क्योंकि अगर तुम कोई भी सर्कुलर मोशन को ले लो, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे, if velocity is in this direction and is in this direction, then definitely centripetal force is like this. अगर सेंटर इधर इधर होता ना कहीं, तो डेफिनेटली सेंट्रिपिटल फोर्स कहीं इधर लग रहा होता, and then circle would have looked like this. But here, since centripetal force, that is q v cross b, is acting downward, it means center is somewhere down. And so take a center just down the velocity point. So यहाँ पे बॉडी है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी भी है, फोर्स ऐसे लग रहा है, कहीं पे भी डाउन पे सेंटर ले लो और फिर आप सर्कल बना दो. ठीक है. एम आई एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड किरण? आर यू गेटिंग मी? ये कैसे आया? ओके. मैग्नेटिक फील्ड डॉट है ना, मैंने बताया था ना कल के क्लास में, जब डॉट होता है तो डॉट का मतलब आउट ऑफ द प्लेन, एंड आउट ऑफ द प्लेन का मतलब प्लेन से ऐसे बाहर आता हुआ. देखो एक्स एंड वाई एक्सिस लेते हैं ना, मैं से, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस. सो दिस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज इन द प्लेन ऑफ बोर्ड. जो भी अभी स्क्रीन सामने दिख रहा है ना, दिस एक्स एंड वाई एक्सिस इज इन द प्लेन. जेड एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन. परपेंडिकुलर कैन बी टू, वन इनटू द प्लेन, अदर आउट ऑफ द प्लेन. सो जो आउट ऑफ द प्लेन होता है ना, उसको हम डॉट से इंडिकेट करते हैं, एंड द वन विच इज इनटू द प्लेन इज इंडिकेटेड बाय क्रॉस. Vectorially, dot को we write k cap, because out of the plane means plus z axis, into the plane means minus z axis, and x axis के लिए unit vector is I cap, y axis के लिए unit vector is j cap, z axis के लिए unit vector is k cap. This is the unit vector notation, right? So if it is dot, then for dot, since it is outward, perpendicular to the plane, it will be k cap.
Got it? इसलिए कह रही हूँ वेक्टर को रिवाइज करो. It's very important. It's very important. I begged you people to do it. Do it, please, as soon as possible. So इस केस में अगर आप देखो v क्रॉस b अगर आप करने जाते हो, velocity is in which direction? I direction. Magnetic field is cross minus k cap. So I cross k क्या होता है? I cross k is minus j, and here there is a minus sign already. It will become plus j. So force is in this direction. Center will be somewhere here. So circle will look like this. ठीक है? चलो. Yes, Kiran. It will look like this. So now you know how to draw. Now you know what will be the trajectory, circular. Now you know how to locate the center of that circle. Okay, fine. Now let's calculate the radius of the circle. So अब तो calculation है सारा का सारा. अगर तुम्हें इतना आ गया है तो तुम सब कुछ आ गया तुम्हें. ठीक है? So इसका radius निकालो. You already know the centripetal force here. Here centripetal force is getting provided by magnetic force acting, and that is equal to QVB sin theta, and this will be equal to how much? mv square by r, क्योंकि centripetal force को हम किससे equate करते हैं? mv square by r से. So theta here is 90 degree because v is perpendicular to b. So angle between v and b is how much? This is 90. So this will become 1. QVB is equal to mv square by r. R will be equal to how much? It will be equal to mv by qb. This is going to be the answer. Okay? So this is the radius. Everyone clear? If not, then let me know. Now simple तुम्हें circular motion का dynamics लिखना है. ठीक है? So here in circular motion, centripetal force is getting provided by magnetic force, that is QVB sin theta. So you equate it with mv square by r. Yes, Sanju? You said no, ma'am. Any doubt you are talking about? अच्छा, no doubt में no ma'am लिखा है क्या? Maybe. If anyone has doubt, then let me know. चलो, नहीं है तो ठीक है, आगे बढ़ते. लेट्स कैलकुलेट द टाइम पीरियड नाउ. सो टाइम पीरियड इज व्हाट? टाइम टेकिंग in moving from in moving or in covering one complete circle. So time period क्या होता है? Distance by velocity. So it is covering the whole circle with a uniform speed, that is with a speed v, and covering one circle, meaning how much distance it is covering? 2 pi r. So basically time period is 2 pi r by velocity. अब आप एक काम करो, 2 pi by v, r का वैल्यू लिख डालो. रेडियस was mv by qb. Just now we have calculated. So time period is how much? 2 pi m by qb. So this is the formula of time period. And you can see here time period is independent of velocity and radius. Independent of what? Velocity and radius. It doesn't depend. It is a constant basically. To the long, magnetic field is same. Okay? So 2 pi m by qb. This is your time period. What is frequency? Frequency, you know, this is 1 by time period. So this will become 1 by 2 pi m by qb. So this is qb by 2 pi m. Okay? Chalo. So this thing we have done. Now tell me, find the power delivered by magnetic force. Read the question and try to answer this. Take 1 minute, read it and tell me. Yes, everyone read it, let me know.
Okay, I got one answer. QVB by T. लक्ष्मी, ओके ठीक है. चलो आंसर तो आप लोगों ने बताया. ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. पावर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ. पावर इच एक पावर तो होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम. सिंपल. पावर को वेक्टर फॉर्म में भी लिखते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी. फोर्स एंड वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट भी होता है पावर. ठीक है. एंड इन केस ऑफ charge particle moving in magnetic field, you already know path is circular, right? And in this circular path, force acting is always perpendicular to velocity. So force is perpendicular to velocity. F dot V क्या होगा? FV cos 90, and that is zero. So no power is getting delivered, and that is why this magnetic force is not able to change the Second, velocity. Yes. Anybody? Okay. Chalo, I'm muting everybody. No issue. So, what is here? Power getting delivered is zero. Or since there is no work getting done, since no work is getting done, velocity will remain what? Constant. So, velocity ka magnitude jo hota hai na, that remains constant. Why? Because no work is happening. Power zero aaya. Okay? And if no work is happening, its speed is not going to change. And direction of velocity is changing because of this force acting. Otherwise, magnitude of velocity is not changing. So if somebody asks you, or if somebody says you that there is a charge moving with a speed 5 meter per second, it enters into magnetic field, moves inside magnetic field for 1 hour. Tell me what will be the magnitude of velocity after 1 hour. It will be same 5 meter per second, because magnetic field is not going to provide it any power. Not positive work, not negative work, no work. Okay, so if it is doing no work, it means its speed will remain constant. So this is this. Okay, everyone clear? Okay, Kiran, ठीक है. चलो चलो आगे बढ़ते हैं. So now let's take a case, Sanju, ठीक है. Now let's take a case where velocity is not perpendicular to magnetic field. There is a charged particle moving in a magnetic field, but velocity is making angle theta with the magnetic field like this. So let's talk about it. अब आप ध्यान से देखना. यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे इस वेलोसिटी का टू कंपोनेंट्स इट विल बी हैविंग. वन कंपोनेंट इज v cos थीटा. ध्यान से देखना सभी लोग. अदर कंपोनेंट इज v sin थीटा. ठीक है. दिस इज v cos थीटा, दिस इज v sin थीटा. नाउ will there be any force acting because of v cos theta component of velocity? Force का फॉर्मूला क्या है? q v cross b. ठीक है. So if you talk about v cos theta component, it is along the direction of magnetic field. So angle between v cos theta and magnetic field is zero. So force because of v cos theta wala component will be zero. Magnetic force. Why? Because v cos theta component of velocity is in the direction of magnetic field. Theta is v cross b अगर आप करोगे, v cos theta का cross with the b, angle between these two is what? 0 degrees. So force is 0. If I talk about this v sin theta, let's indicate it by v perpendicular and let's indicate it by v parallel. So v parallel is what? It is the component of velocity parallel to magnetic field. Because of this, force is 0. This is v perpendicular. This is the component of velocity perpendicular to magnetic field. So because of this v sin theta, force will act. ठीक है. सो इसकी वजह से फोर्स किधर लगने वाला है ये बताओ. मैग्नेटिक फील्ड इज टुवर्ड्स आई कैप, वेलोसिटी इज टुवर्ड्स जे कैप. ठीक है. सो जे क्रॉस आई करोगे आप, एंड इफ यू आर डूइंग जे क्रॉस आई क्या होगा? जे क्रॉस आई, दिस इज माइनस के कैप. सो फोर्स इज एक्टिंग इन द माइनस के कैप डायरेक्शन. What does it mean? It means that its center at this point, its center will be towards the minus k cap direction, right? समझ रहे हो? So I will tell you now two things. First thing is that because of v sin theta, that is because of v perpendicular, magnetic force acts, है ना? और अगर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रहा है, then it will go in a circle.
ठीक है. So because of V sin theta, magnetic force is acting, and because of this, it will go in a circle. And here this circle will have a center towards minus k cap direction. ठीक है. This is sorted. Because of V cos theta, what happens? V parallel पे क्या हो रहा है? Magnetic force is zero. So no force is acting, but this velocity is there, right? So because of V cos theta, charge will keep on moving in this direction, in the direction of magnetic field. And because of V sin theta, it will go in a circle. It will go in a circle. ठीक है. कैसा सर्कल में जाएगा वो? That circle will have radius in the minus k cap direction. So circle xy plane में नहीं होगा. Not in the xy plane. That will be in which plane? That will be in which plane? बोलो. You can say that will be in xyz plane, right? डन है. क्योंकि वो I mean उसका सेंटर कहीं इधर है. ठीक है. तो वो ऐसे ऐसे कुछ मूव करेगा. डन है. एंड सिंस ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, फॉरवर्ड भी उसकी एक वेलोसिटी है. सो ऐसे ऐसे मूव करते हुए वो आगे की तरफ जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं हेलिकल ट्रेजेक्टरी. ठीक है. सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग हियर, इट विल मूव इन अ सर्कल लाइक दिस, एंड दिस सर्कल विल मूव फॉरवर्ड विथ a speed of v cos theta. Done it? And that trajectory or that path will look like helical. So we say that when V makes an acute angle with V, then its path is what? Its path is helical. Because that circle has a velocity, I mean that charge has a velocity in this direction, along the direction of magnetic field. And this charge is also moving in a circle. It means it will go in a circle and also move aage. It will go in a circle, move aage. So these two things are happening at the same time. It means it is moving like this. ठीक है. ऑलवेज रिमेंबर, देखो ज्यादा तुम लोग डायरेक्शन निकालने में मत जाना, कंफ्यूज कर जाओगे. सो एक चीज मैं तुम लोगों को यहाँ शॉर्टकट बता दूं कि वेन एवर यू आर गिवन वेलोसिटी मेकिंग सम एंगल विथ मैग्नेटिक फील्ड, जो हेलिक्स होगा, जैसे हेलिक्स मैंने इधर नहीं बनाया है, ऐसे नहीं बनाया, किधर बनाया? बी के अलोंग बनाया है. ठीक है. क्यों? क्योंकि वी पैरेलल था इस डायरेक्शन में. सो ऑलवेज हेलिक्स विल लुक लाइक इट इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. Everybody understood this helical trajectory? If yes, then let me know. If not, then also let me know. Yes, your doubts will be appreciated, don't worry. And if you have understood, then also let me know. समझ गए? वेरी गुड, थैंक यू सो मच. अब देखो, अब तुम्हें कुछ नहीं करना, अब तुम्हें निकालना है इस हेलिकल पाथ का ट्रेजेक्टरी क्षेत्र. ओके, शॉर्ट नोट में बता सकती हूँ. देखो इसमें बताना ये है, अब मैंने ये बोला कि यहाँ पे तुम्हारा क्या है, देयर इज अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन दिस डायरेक्शन. ठीक है. इट्स वेलोसिटी एट दिस पॉइंट इज डायरेक्टेड इन दिस डायरेक्शन. ठीक है. velocity is in this direction, there is a charge. Velocity in this direction, there is magnetic field here in this direction. So because of this magnetic field, what will happen? This velocity has two components, one along the magnetic field v cos theta. Because of v cos theta, no force is acting. Another component is v sin theta. So basically, because of v cos theta, this charge will have tendency to go along the direction of v, and because of v sin theta, magnetic force is acting. That will be circle. So if charge is moving along this direction also, and it is also moving in a circle, so circle has to look like this. ठीक है. सो बेसिकली ये सर्कल ही आगे की तरफ जा रहा है v cos theta. इज इट क्लियर? ओके. आई होप आई फील लाइक यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इट. चित्रा, इज इट क्लियर? इफ नॉट तो मुझे अनम्यूट करके बताओ क्या नहीं समझ पा रहे हो. अच्छा, समझ गए, चलो ठीक है. ठीक है, चलो. सो अगर मुझे रेडियस निकालना है इस हेलिकल का रेडियस,
यानी कि इस सर्कल का रेडियस बताना है, और रेडियस का अभी अभी हमने प्रीवियस में फॉर्मूला निकाला था, एम वी बाई क्यू बी, ठीक है. देयर वी वाज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, सो हियर आल्सो वी विल टेक वी परपेंडिकुलर. सो बेसिकली एम वी साइन थीटा बाई क्यू बी, क्योंकि बिकॉज ऑफ वी साइन थीटा ओनली इट इज गोइंग इन अ सर्कल, सो रेडियस विल बी एम वी साइन थीटा बाई क्यू बी. And we already know that time period doesn't depend on radius and velocity. So time period तो same होगा 2 pi m by qb. Also frequency will be same. That will be 1 by time period. So that is qb by 2 pi m. ठीक है. And there is one more term that is called your pitch. So इसको मैं कल के क्लास में समझाऊंगी. अगर अभी समझा दिया तो जल्दी जल्दी में क्या पता तुम लोग नहीं समझ पाओ. तो पिच का मतलब कुछ नहीं होता है. इट इज सिंपली how much horizontal distance it will cover in one time period. So horizontal distance it is going because of v cos theta velocity, right? In this direction, why it is going? Because of v cos theta. So pitch is what? It is horizontal distance covered in one time period. ठीक है. So pitch value will be how much? V cos theta into time period. ठीक है. So v cos theta into 2 pi m by qb. This is your pitch. So pitch का मतलब वो सर्कल वन टाइम पीरियड में आगे कितना जा रहा है. वेवलेंथ जैसा कह सकते हो, बट यहाँ पे वेव नहीं है. ठीक है. सो इट इज लाइक दिस. आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड इट. कल की क्लास में आई रियली हैव अ क्वेश्चन फॉर यू पीपल. वी विल बी डूइंग इट, बट आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट कि तुम लोग क्या करना, तुम लोग थोड़ा क्वेश्चन करके आना, so that you people will have some background. Nirali, Priya, how are you people? You people didn't reply. Latika, आज कुछ बात नहीं करी तुम लोगों ने. रंजू, चलो ठीक है, तुम सभी लोग क्वेश्चन करना. ठीक है. एवरीबडी कीप ऑन डूइंग मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस. चलो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. वी विल मीट tomorrow, not tomorrow, day after tomorrow. Tomorrow is Sunday, right? So on Sunday we will be having break, and on Monday we will be meeting again.